Anshul ji, kindly all also temporarily mute all participants. सारा दिन गाने तो कम नहीं है तेरे को। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो सर। Thank you, Anshul ji. Dear friends, I would like to inform everyone that today's webinar is being chaired by President CA Sanjeev Gupta ji, and coordinator for the today's webinar is CA Arun Gupta ji and CA Pushkar Soni ji. Our executive member CA Anshul Suji is taking care of all the technical aspects. Thank you. Friends, I feel delighted to name the distinguished speaker for the today's webinar, Shri Yogesh Jain ji, CEO of the Smart Beach, who is with us to deliberate the very important topic, changes in the ITR forms and Form 3CD for AY 2024-25. Friends, name of the SmartX is very well known to all of us. Almost most of the professionals are using this very software, which is unique in its very aspects. Unique record of SmartX and their executives in providing flawless services and timely resolution of the queries and issues that arises to our professionals in their day-to-day working is very much commendable, and I think so everyone is very much endorsed to that view. Before proceeding further on this very useful webinar, at this time when our practice session is just about to start, I request my President sir to have a welcome address to the speaker and to all the present. Sanjeev ji sir. Thank you, Deepak ji. Good evening to everyone. Friends, just yesterday we had election results for the Lok Sabha, and it was a very well thought out election. Unfortunately or fortunately, no party got clear mandate to rule the country, and after 10 years, coalition governments are going to be a norm of the day. Let's hope the country and economy does not have to pay for the same, and India keeps on growing. With this note, coming to the DTB activities, in the last month, friends, we have taken a new initiative wherever we started the DTBA discussion forum, and the first meeting was a great success with about 50 members participating. We are committed and shall be taking this initiative forward in the coming months. Then in the last month, we are very pleased to share with you that we organized an interactive meeting with Union Minister CA Piyush Goyal ji and former Finance Minister of Punjab, Sardar Manpreet Singh ji Badal, which was again very well attended. Also, in the coming weeks and months, we shall be organizing many more programs with celebrations of Yoga Day on 21st June and other programs. We at DTBA seek your views and suggestions for the nature and types of the program that we can organize in the coming times. Friends, we are at the beginning of June and ITR and tax filing session is going to start. This time, department has proactively released many ITR forms, and to update the members on the same, today we are going to have a webinar on changes in the ITR forms and Form 3CD for assessment year 24-25. To deliberate on the topic, we have amongst us a very learned Shri Yogesh Jain ji, who is the CEO of Smart Beat Technology and is an expert on the subject. I'm sure that the members will be greatly benefited from his deliberation. I'm extremely thankful to Yogesh ji for acceding to our request to address the webinar in spite of his very busy schedule. I welcome you, Yogesh ji, to this webinar. With these words, I hand over the proceeding to CA Deepak ji. Deepak ji, please. Thank you, sir. Thank you. Friends, we welcome Navdeep ji from SmartX formally. Also, I apologize for being not able to do this before. I also welcome some of the other senior faces which I can see. Dinesh Sharma ji, Namaskar, Grover ji, Kapoor sir. All of you are welcomed.
now I may request Pushkal Soni ji to have a introduction of the worthy speaker for the today. Before that, I also may inform the members that worthy speakers has told कि वो जो queries हैं वो queries साथ साथ ही लेना पसंद करेंगे. जैसा भी कोई वो deliberate करते हैं और उसमें आपकी कोई भी query निकलती है तो speakers are there to take that queries as and when it arises. So anybody can give a raise hand or in the chat box. And I request CA Arun Gupta ji and Pushkal Soni ji to conduct the query session. Now I hand over the proceeding to mic to Pushkal Soni ji. Thank you, Deepak ji. Good evening. Good evening to all. It will be privilege for me to introduce our worthy speaker, CA Shri Yogesh Jain ji. Shri Yogesh Jain ji, one of the renowned personality in the taxation software industry, popularly known as Smart Tax. Yogesh Jain ji is a commerce graduate with a postgraduate degree in computer science from DAV University, Indore. He is CEO of SmartWiz Technology Private Limited and has over 20 years of experience in the field of information technology field related to direct tax and indirect taxes. He has also provided consultancy in information technology to various public and private sector organizations. SmartBiz Technology has a strong and experienced team with skills and knowledge in all relevant areas. I welcome Shri Yogesh Jain ji from our DTVA Parivar. Thank you, sir. Thank you, Soni ji. Thank you. Now I request Yogesh ji to start the deliberation. Yogesh ji. Yogesh ji, you are not audible, Yogesh ji. Yogesh ji, you are not audible, sir. No, sir, no. No, No. not audible, sir. No, sir. Now I'm audible? Yes, sir. Yes, That's fine. now Now audible, it's sir. fine. That's great. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all esteemed members of DTBA Ludhiana to this live webinar on changes in ITR forms for assessment year 2024 and 25. I hope that all of you find this useful. So let's start with this webinar and I'll share my screen with all of you. I hope screen is visible to all. Yes, sir. Yes. Yes, sir. It's visible. Okay, so let's begin. So let's start with the changes in ITR forms. So the first change which we are about to discuss is individual HUFs which are liable for tax audit can e-verify their ITR using EVC. So this is only for ITR 3. Rule 12 has been amended to allow individuals and HUF who are liable to tax audit under Section 44AB to verify the return of income through an electronic verification mode. Earlier, they could verify the return only through digital signature. So now you can verify this return either using Aadhaar OTP, or if you have pre-validated bank account, DEMAT accounts, you can get an e-verification code and verify your return. There is no need of digital signatures for ITR 3. Sir, for Yogesh ji, sorry to interrupt. For tax audit report, sir.
No, this is only for ITR 3. Okay. But it means they must have discussed it. Right. At present, it is for ITR 3, but let the system come, maybe they allow for the tax audit also. I think tax audit would be possible, but let's wait. सर ITR 3 का तो पहले से भी विदाउट डिजिटल ही था, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट करता था उसका डिजिटल तो होता ही था. Right, right. आई थिंक इससे कोई पर्पस तो हल होगा नहीं. Maybe let's the process start. Maybe I think audit report and ITR both should be possible without DSC. Second is furnishing of due date of filing of return. This is applicable in ITR 3, 5, and 6. A new column has been inserted in ITR form seeking information on the deadline for submitting the income tax return. The taxpayer is required to select the applicable due date of filing of the return from the provided drop-down options, namely July 31st, that is for non-audit cases, October 31st, that is for audit cases, or November 30th for report under section 92E. In this case, SmartX shall automatically determine the date and automatically mention in the ITR computation, and the user need not worry about the correct date. The third change is, this is the most important change which they have done. The new tax regime is the default tax regime. Taxpayers must choose to opt. The Finance Act has been amended. The provision of section 115 BAC to make it, if the default tax regime for the SESI being an individual, HUF, AOP, body of individual, or artificial judicial person, if the SESI does not want to pay tax according to the new tax regime, he will have to explicitly opt out of it and choose to be taxed under the old tax regime. To exercise this option, the SESI having income other than income from business or profession must indicate his choice of tax regime in the return of income to be furnished for the relevant assessment year under section 139(1). An assessee having income from business or profession can opt out of opt of the new tax regime and switch into the old tax regime for the relevant year. However, he has to exercise this option in Form 10IEA on or before the due date of filing of the return of income under section 139(1). So this means that earlier, whatever options we have selected, either we have opted out or opted in, so all those options have been nullified. So all the assessee has been brought to the one particular regime, that is a new tax regime. Even it is for those assessees whose option has been not applicable any further, that he could not opt in for a new regime. Now by default, he is into the new regime. The only thing he has to do is, if he wants to go back to old regime, then he has to file the form number 10IEA. So in simple words, an assessee filing ITR 1 and ITR 2 is only required to indicate his choice of tax regime in return of income. An assessee filing ITR 3 will be required to file Form 10 IEA to opt out of the new tax regime. I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Okay. So next change is this details of legal entity identifier. This has been added. This is applicable to ITR 2, 3, 5, and 6. The LEI is a 20-character alphanumeric code used to uniquely identify parties in financial transaction worldwide. It has been implemented to improve the quality and accuracy of financial data reporting system for a better risk management. As per IRBA regulations, all single payment transaction of INR 50 CRs or above undertaken by entities, that is non-individuals, should include remitter and beneficiary LAI information. This applies to transaction undertaken through NEFT or RTGS payment system. In order to be in line with RBI regulations, the new ITR form has incorporated a column for furnishing details of LEI number. Such taxpayer is required to furnish LEI details if he is seeking a refund of
50 CR or more. Another change is there that is related with the tax audit, that is furnishing of the reasons for tax audit under section 44AB. This is applicable to ITR 3, 5 and 6. New ITR 3 seeks an additional details from the SECI subject to the audit under section 44AB. The additional information pertains to the circumstances under which the company is obligated to undergo an audit, such as first, sales turnover gross receipts exceeds the limit specified under section 44AB, or a SECI falling under section 44AD, 44ADA, AE, or 44BB, but not offering income on presumptive basis, or any others. So these things a SECI has to mention why the audit is being conducted. So these points are being asked in SmartX, and you can specify these details before furnishing the ITRs which are under audit. Next change is furnishing of acknowledgement number of audit report. This is applicable to ITR 3, 5 and 6. When providing information about audits conducted under section 44AB, including audit under section 92E, companies are required to furnish the acknowledgement number of the audit report. Earlier date was being asked. Now the acknowledgement number also has to be mentioned in the ITR forms. Next change is receipts in cash. This column has been added to claim enhanced turnover limit. This is applicable to ITR 3, 4 and 5. The Finance Act 2023 has enhanced the turnover threshold limit from INR 2 CR to INR 3 CR for opting for the presumptive taxation scheme under section 44AD. If the receipts in cash does not exceed 5% of the total turnover for the previous year, it is also provided that the meaning of cash would include the check or bank draft which is not an account pay. Similarly, in section 44ADA was amended to enhance the threshold limit of gross receipts from INR 50 lakh to INR 75 lakh if the receipts in cash do not exceed 5% of total gross receipts for the previous year. So to give effect of above amendment, the CBDT has amended ITR form to include a new column that is received in cash for disclosing cash turnover or cash gross receipts under the Schedule BP. Earlier, there were only two columns. That was one with the payment through bank transfer, and second was the others. Now there are going to be three columns. The payment through bank transfer, cash, and third one is others. So initially we used to mention the cash transaction in others column. Now there's a special separate column where you have to specify the cash payments. The next is related with the MSME, disclosure of the sum payable to MSME beyond the prescribed time limit. This is applicable to ITR 3, 5 and 6. The Finance Act 2023 has inserted a new clause H in section 43B to provide that any sum payable to micro small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of Micro Small Medium Enterprise Development Act shall not be allowed as deduction. Accordingly, a new column is inserted under Part A, OI, other information to disclose the sum payable to micro or small enterprise beyond the specified time limit as per MSME Act. So these are the snapshots of the ITR in which the point number 10 is there, that as any amount is allowable under section 43B in any preceding year, but allowable during the previous year. So in column H, you have to mention this detail. And there's a column 11, point number 11, any amount debited to P&L account for the previous year, but disallowable under section 43B. Again, 11H, you have to specify the amount over here. The next change is disclosure of information pertaining to capital gain account scheme. This is applicable to ITR 2, 3, 5, and 6. So the Schedule CG of ITR form seeks information about the capital gains earned by the taxpayers. The schedule requires various details, including information about the capital assets sold, the particular of the buyer, and the specifics regarding the amount spent for claiming exemption. In the newly notified ITR 2, 3, 5, and 6,
Schedule CG has been modified to gather more information pertaining to sum deposited in capital gain account scheme. Earlier, only the amount was being asked. Now there are some extra details which are being asked. So those details are like this. So the additional details in capital gain account schemes are like, what is the date of deposit, in which account number you have deposited the amount, what is the IFSC code. So like previous year, you used to just specify the amount. Now all the complete details would be going for the capital gain account scheme. So there is a new section added, that is 115 BB, disclosure of winning from online games chargeable under section 115 BBJ. This is applicable to ITR 2, 3, 5 and 6. The Finance Act 2023 has inserted a new section 115 BBJ to tax winning from online games with effect from assessment year 24-25. A corresponding section 194 BA has been also inserted with effect from 1/4/2023 for deduction of tax from the net winning from online game. Thus, all winnings from online games on or after 1/4/2023 shall be taxable under section 115 BBJ and subject to the TDS under section 194 BA. To report such income in ITR form, schedule OS, that is other sources, has been amended to disclose income by way of winning from online games chargeable under section 115 BBJ. The next change is a new schedule 80 GGC has been added. It seeks detail of contribution made to political parties. This is again applicable to ITR 2, 3, 5 and 6. Section 80 GGC allows for deduction for contribution to political parties or electoral trusts. The new ITR form includes a new schedule 80 GGC which requires the furnishing of the following details. Initially, the only amount was being specified. Now you have to specify the date of contribution, contribution amount. Again, the breakdown of contribution has to be specified, whether it is made in cash or other modes. Eligible contribution amount, transaction reference number, IFSC code of bank. So all these details have to be specified in this ITRs. A new column has been added to claim deduction under section 80 CCH. This is applicable to ITR 1, 2, 3 and 4. The Finance Act 2023 inserted a new section 80 CCH which states the individuals enrolled in Agnipath scheme or subscribing to Agnivar Corpus Fund on or after 01/11/22 will be eligible for deduction for amount deposited in Agniveer Corpus Fund. So the new ITR form has been amended. The section 80 CCH is there. SmartX is also updated, and you can add details if a SECI wants to claim deduction in this section. So this is also another important change. Schedule 80U is inserted for claiming deduction if the SECI is a person with a disability. This is applicable to ITR 2 and 3. The deduction and section 80U is allowed to a resident individual who is suffering from disability or severe disability. An absolute deduction of INR 75,000 or INR 1,25,000 is allowed under the provision if the individual is suffering from disability or severe disability respectively. In previous ITR, taxpayers were required to mention the amount claimed as a deduction under section 80U in Schedule 6A. However, in new ITR, a new Schedule 80U has been added seeking details of deduction in case of person with disability. Earlier amount was being asked. Now further details are being asked, and you have to even file one form. The new Schedule 80U seeks the following details: nature of disability, that is whether it is disability or severe disability, date of filing of Form 10IA. This Form 10I has to be filed before filing of ITR. Acknowledgement number of Form 10IA and UDID number if available. So make sure that this form is filed before claiming deduction under section 80U. Sir, UDID number is to? This is, I think, unique document identification number है. Right, sir. सर जैसे उनको 80U का सर्टिफिकेट तो पुराना मिला होता है तो उस पे नंबर होगा, चेक करना पड़ेगा. But this is, not mandatory. Or not mandatory if available. It is not mandatory. The filing of Form 10IA is mandatory. If UDID number is available, you can mention it. Otherwise, you can skip it. Right.
A new schedule 80DD seeks details toward maintenance and medical treatment of person with disability. So this is applicable to ITR 2 and 3. Deduction under section 80DD is allowed to a resident individual or HUF who incurs medical expenditure or pays an insurance premium for the benefit of family members suffering from a disability. Again, a deduction of 75,000 or 1,25,000 is allowed if a person is suffering from severe disability or disability. In previous ITR form, the taxpayers were required to mention the amount claimed as deduction under section 80DD. In Schedule 6A, the new ITR form have introduced a new Schedule 80DD seeking details of deduction in respect of maintenance, including medical treatment of dependent with a disability. So again, the form number is same, Form 10IA, and either you can use it for 80U or you can use it for section 80DD. The form will remain the same. So again, the details being asked are the same, the nature of disability. The only difference is there is a type of dependent being asked over here, whether it is spouse, son, daughter, father, etc. PAN of dependent is asked, Aadhaar of dependent is asked, date of filing and acknowledgement number of Form 10I is asked. Again, UDID number, if applicable, you can specify over here. The next change is reporting of dividend income derived from unit located in IFSC, International Financial Service Center. This is applicable to ITR 2, 3, 5, and 6. The Finance Act 2023 has amended the provision of Section 115A by inserting a proviso to Section 115A 1AA to provide that the dividend income received from a unit in IFSC as referred in Section 80LA 1A shall be taxed at a reduced rate of 10% instead of 20%. So Schedule OS has been amended in new ITR form to incorporate such change. So all those dividend shall be reported in Schedule OS and a reduced tax rate of 10% shall be applied in such cases. So Schedule OS includes an additional column for the declaration of bonus payment received under life insurance policy. So this is also an important change. Basically, in our previous ITRs, people used to specify this amount either in capital gain or in other sources. So now they have given a special column for this. So it's namely read like this: the Finance Act 2023 made various amendments with respect to taxation of life insurance policies. A new clause 13 has been inserted in section 56(2), which provides that the sum received from excess or high premium life insurance policy is chargeable to tax under the head other sources. So all those income generated from this, you have to specify in this clause only. ITR form has been updated to incorporate reporting of such incomes and Schedule OS. So these points have been also added in SmartX, where you can specify these details. So next change is reporting of sum received from unit holders from the business trust. This is applicable to ITR 2, 3, and 5. In order to avoid the dual non-taxation of certain sum distributed by the business trust to unit holders, the Finance Act 2023 inserted a clause 12 to section 56(2). Section 56(2)(12) provides that the sum received from the unit holder shall be taxable under the head of other sources. The cost of acquisition of the unit shall be allowed to be deducted from the sum received on redemption. To report income earned by unit holder under section 56(2)(12), ITR form has been amended to include a new column under Schedule OS. Again, this point has been also added in the SmartX. The next change is adjustment of unabsorbed depreciation pertaining to additional depreciation from WDV of block of asset as on 1/4/2023. This is applicable to ITR 3 and 5. So it is like once you shift to a new regime, so whatever additional depreciation which you have claimed, so those adjustments you have to specify. The Finance Act 2020 inserted section 115 BAC with effect from the assessment year 21-22 to provide an alternative regime with lower tax rates in the case of individuals or HUF. The Finance Act 2023 extended the scope of this regime to AOP, body of individual, and artificial jurisdiction person as well, and makes it a default regime. However, an assessee has to forego various exemptions and deduction under this regime.
an assessee opting for Section 115 BAC is not eligible to set off unabsorbed depreciation attributable to additional depreciation. Such unabsorbed depreciation relating to additional depreciation which has not been given a full effect shall be adjusted to the WDV of the block of asset as on 1/4/2023 in the prescribed manner. So whatever additional depreciation which has been claimed earlier shall be adjusted in this ITR, and if you are going with a new regime. The third provision to Rule 5 within bracket 1 provides that the WDV of the block of the asset as on 1/4/2023 shall be increased by such depreciation not allowed to set off. Similarly, Schedule DPM has been also amended. In the new ITR form, Schedule DPM, which deals with the depreciation on plant and machinery, has been amended. It provides that the WDV of the block as on 1/4/23 shall be increased by the amount of unabsorbed depreciation pertaining to additional depreciation, which was not allowed to be adjusted on account of opting of Section 115 BAC. So all these columns are also available in SmartX where you can specify these details. So a new Schedule 80 IAC seeks detail in respect of eligible startup has been added. This has been added in ITR 5 and 6. Deduction under Section 80 IAC is available to eligible startup for 3 consecutive assessment years out of 10 years. These deductions are allowed subject to the fulfillment of certain conditions. The new ITR 5 and 6 has a new schedule seeking details with respect of deduction claimed by companies under Section 80 IAC, which includes the following. The details are like this: the date of incorporation of the startup, the nature of business, certificate number as obtained from Interministerial Board of Certification, first AO assessment year in which deduction was claimed, amount of deduction claimed for current assessment year. So earlier the only amount was being asked, now these detail has to be also filled. A new Schedule 115 TD has been inserted for reporting tax payable on accredited income. This is applicable to ITR 5 and ITR 6. The exact tax on accredited income for trusts and institutions under Section 115 TD of the Income Tax Act 1965 is a tax levy introduced to address the conversion, merger, or dissolution of charitable or religious institution that have been previously enjoying tax-exempt status. The exact tax mechanism serves as a crucial regulatory measure, ensuring that the financial resources, the assets of charitable and religious institutions continue to serve the public good even in case of the structural or operational transformation. Therefore, a new Schedule 115 TD has been inserted in ITR form for reporting of tax payable on accredited income. This schedule requires various details such as the computation of accredited income, fair market value of total asset as reduced by total liability, tax on payable on accredited income, and details of challan of deposit of tax of accredited income shall be reported in ITR 5 and ITR 6. The next change is assessee recognized as MSME. This is applicable to ITR 5 and ITR 6. The new ITR 5 mandates that an assessee should furnish information regarding its recognition status as a micro, small, and medium enterprise. It is also required to provide registration number allotted as per MSME Development Act 2006. So the plain number has to be specified. This is again being asked in the assessee master in SmartX. A new field for opting concessional regime under Section 115 BAE. This is applicable only to ITR 5. So a new tax scheme has been introduced by the Finance Act 2023 for the resident cooperative societies engaged in the manufacturing and production of article or thing. If a cooperative society opts for this scheme, then income will be taxable at a concessional rate if certain conditions are fulfilled. In order to avail the benefit of Section 115 BAE, the cooperative society is required to furnish Form number 10 IFA on or before the due date specified under Section 139(1). In the first return of the income from previous year relevant to the assessment year commencing from the first day of April 2024. To align changes
brought by the Finance Act 2023, a new field has been inserted seeking details on whether the SECI is a manufacturing cooperative society opting for taxation under Section 115 BAE. Further, date of filing Form 10 IFA and its acknowledgement number is also required to be furnished. So two things are important, that you have to specify that cooperative societies who are opting for this section has to say mark yes over here, and Form 10 IFA has to be filed before filing of ITR, and its acknowledgement number has to be mentioned in the ITR. So these are the changes in ITRs. And before I begin with 3CD, any questions? Yeah, members, if you have any question, please raise your hand, or you can write in a chat box also. Kindly share this PDF. Yes, we will share it. So any query from any member? Okay, sir, we can move forward then. So changes in 3C, there are very few. Still, I'll just walk through it. First is clause 8A. So all these are interlinked with the ITRs. So whether the SECI has opted for taxation under Section 115 BA, BAA, BBA, BAC, and BAD. So new section has been inserted, that is 115 BAE. So this is a similar what we discussed earlier. So in clause 8A, tax audit, you have to specify this section has been opted for. So clause 18A. So again, this refers to the additional depreciation. Particulars of depreciation allowable as per the Income Tax Act 1961 is respect of each asset or block of asset. So whatever adjustment which we have to make on account of the additional depreciation, the same has to be also reported in clause 18A. This is again applicable for 24-25. So in clause 19, other has been added, amount admissible under section debited to P&L account, showing the amount debited to deduction allowable under each section separately. So in all the sections, so okay, if there's a question, if a person have been business income, then they have to file Form 10 IA or not. If they are opting out, they have to file it. There is one more question. There is one more question. This in is case of- at present not clear. Like if you have a business income and you opt out, and whether you can opt in or not. So there is a mixed opinion. Although when we see the form, it says that you can use this form twice in a lifetime, but still the clarity is not there. Whether you can opt in after opting out. Okay, sir, we can move forward. So there are some description changes in clause 21, Roman V and I. The earlier it was like expenditure by way of penalty or fine for violation of any law under for the time being enforced. So this was the wording still April assessment in 23-24. Now this has been changed to the following description: expenditure for any purpose which is an offense or is prohibited by law, or expenditure by way of penalty or fine for the violation of any law enacted in India or outside. There's a description change for this point. So old description and new description both are mentioned over here. So again, there's a description change over here for point 3. That is expenditure incurred for any purpose which is an offense or which is prohibited by law. This was up to 23-24. Now the description has been changed, that is expenditure incurred to compound an offense under any law for time being enforced in India or outside India. So new clause has been also inserted in clause 21. So it reads like this: expenditure incurred to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person, whether or not carrying on business or exercising
a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline, as the case may be, for the time being in force governing the conduct of such a person. So in 21, this new point has been added, and clause 22B, a point clause H has been added that relates with the MSME, that any other amount not allowable under clause H of section 43B of the Income Tax Act. So this has to be reported in clause 22B. Clause 32A, again, this is the details of brought forward losses or depreciation allowance adjusted in case of section 115BA is opted. So that is losses of prior years due to allowance under section 115BA shall be reduced in assessment at 24-25. So any unabsorbed depreciation which you have carried forward has to be again adjusted in this year if 115BA is being opted for. In similar fashion, additional depreciation claimed in prior years shall be adjusted on account of opting of taxation under section 115BA. So all those adjustments due to the change in the regime has to be specified in the tax audit reports. So again, clause 23 relates with the section-wise details of deduction. So a new section 80CCH, again, this correlates with the ITR. 80CCH is with the Agnivir Corpus Fund. So any contribution, any deduction claimed in this section shall be also reported in tax audit report. So again, this also correlates with the ITR that is related with the online gaming platform. So section 194BA has been added in clause 34A. So this is also again virtual digital assets, clause 34B. Following forms have been added. Form 26QE, that is a tax audit tax deducted on VDA to be deposited in Challan cum statement. And Form 26QF, that is a quarterly statement of tax deposited in relation to transfer of virtual digital assets. So all these two forms also have been added in clause 34B. So that comes to the end of the changes. So there's one question, one issue in SmartX regarding 44AD, we have to enter book profit separately again. 3 subpart, which is not possible. In old, we have to enter total book profit. Please elaborate on this also. Okay. Earlier, we had given this option that SmartX used to automatically divide the details on pro rata basis, but we had a quite number of feedback from our users saying that they want to enter profit on their own. So they would specify how much percentage of profit they want to show in cash, how much percentage of profit they want to show in other than cash. So keeping that suggestion in our mind, we had made these changes, but still we have received a feedback from many users that they would prefer to have the same old version. So what we are going to do is shortly we will release an update in which we will gonna give an option to a user whether he wants to mention the details on his own or whether he wants SmartX to compute those details. So this we will provide in the next update. Whether person liable to collect is which ITR forms are now available for filing. So these are ITR 1, 2, 3, and 6, which are available filing. In SmartX 1, 2, 4, and 3 are available. 6 we shall be releasing very shortly. Maybe next week you will also get the 6. And 5 should be also, we have sent our discussion, we have sent our ITF 5 for approval to ERI. So that will be also approved and that will be also released shortly. Hello.
हाँ हाँ जी, any other query of the members? So ये होगी query is clause 22B regarding There are MSME queries in separately the in chat form box. 3CD. Sir unmute कर लें please. योगेश जी unmute कर लें. योगेश जी अपने को अनम्यूट करिए प्लीज. 3CD, 3CD has been amended in SmartX. Okay. Well, there is a one query whether person liable to collect TCS but has not collected TCS is required to be reported in Form 3CD. I think this was applicable earlier also, Yes. but still I'll just get it cross-checked. एक ये सुमीर जी की थी, whether person In case of opting out of old regime, Yes, whether this assessee has one. to file any form. अभी तो न्यू regime होगी ना ऑटोमेटिक, तो ऑप्ट आउट तो न्यू regime से करना होगा ना. सुमीर जी आपकी क्वेरी है कि whether opting out of old regime, whether assessee has to file any form. Now new regime is automatic. Hello? हाँ एक सेकंड. Okay, I'll just for some of the question I've asked Kavita to come, so she will address those questions. देखिए अरुण जी, कोई और क्वेरी किसी की पेंडिंग है टू एड्रेस? अभी तो कोई खास क्वेरी तो है नहीं. We can ask members to They are asking whether person liable to collect TCS but may not have collected TCS is required to be reported in Form 3CD. ये तो पहले भी था ना. So I think I have reconfirmed this was the person who has asked whether the person liable to collect TCS but has not been collecting TCS is required to be reported in form. I think this was earlier also. योगेश जी, you are right, sir. And 22B हमने audit forms update कर दिए ना. I think the person who has asked is clause 22B. I think his software needs to be updated. This has been updated in SmartX. 3CD for current year is being made in SmartX. There is no issue. Sir. सर ITR फॉर्म You का can- कौन से कह रहे थे? यूटिलिटी आ गई है. ITR 1, 2, 3, 4. All these are available in SmartX. ITR 6 will be released shortly by next week. ITR 5 department has asked the software developers to give their JSON file for testing. So we have already submitted the ITR 5 for UAT testing to the department. So once it is approved by the department, we will release the ITR 5 also. Tax audit is being uploaded now. Pardon? Tax audit, sir, audit Tax report. audit is already there in SmartX. अपलोड हो रहे हैं सर? Yes. You can submit the audit forms. There is no issue. Sir, what is your take on this MSME? क्या करें अब, जैसे we should wait for the new budget or not? What is being, because you are very much touch with the CPG people or with the department, तो क्या करें? I think CA lobby is more better organization to reply on this. But still, I feel we should go as per the existing ITR and existing 3CD forms, and we should report it accordingly. That So this time they are asking for so much information. For non-audited assessment, they have incorporated information in the ITR form. your voice is not audible. Well, I am saying they are asking for so much information. For non-audited assessment, they are also asking for the information on MSME. Right, absolutely right. That सर issue is. मोहित जी, तो जुलाई तक वेट कीजिए सर, मैडम बोल के गए हैं आपको. सर क्या वेट करें सर, समझ नहीं आ रहा. बैंक कह रहा है बैलेंस शीट दे दो, ऑडिट रिपोर्ट दे दो, और टाइम हो रहा है और हम कैसे करें, समझ नहीं आ रहा. So there is a query in ITR in case of sale of immovable property. Is there any possibility not to give stamp duty value as per section 50C of the Act, as there is an option
And as an option with the necessity to give reasons for lower market value than the circle rate. in ITR, in case of sale of immovable property, is there any possibility not to give stamp duty value as per section 50C of the Act? फॉर्म में मांगी हुई है, जीरो डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, तो कंडीशंस के साथ वो चलती है। नहीं, the thing is that it is being asked in the form, so you can specify 0, but it will go as 0 over there. So I would suggest it is better to specify the stamp duty. नहीं सर, एक्चुअली उनका टेक ये है कि अरुण जी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेट अज्यूम 10 लाख है, लेकिन वो उससे कम मार्केट रेट जो है सेल का वो क्लेम करना चाहता हूं मैं, जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में। तो जब हम सॉफ्टवेयर में दोनों जगह पे, एक जगह पे 8 लाख डालते हैं, दूसरी जगह पे 10 लाख डालते हैं, तो विच एवर इज हायर उठाता है वो। Right. 0.5% वो तो वो lower The only thing is the difference which is allowable is up to 0.5%. 0.5 या 0.10 नहीं, whatever, चलो that is 0.10%. 10% सर, 10%। तो उठाएगा। एक्चुअली ये डिस्कशन का पॉइंट है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ITR, थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में मेंबर्स ही, क्योंकि ये मतलब इट्स नॉट कि स्मार्ट टैक्स का इशू नहीं है कि वहां पर वो कुलभूषण जी पूछ रहे हैं, वो उनका क्वेश्चन ठीक है कि भाई सपोज करो सर्कल रेट से हम कम रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन देयर आर जेन्युइन इश्यूज ड्यू टू व्हिच सर्कल मतलब वहां पर रेट एक्चुअल में सर्कल रेट से कम है प्रॉपर्टी का, तो हम कम क्लेम करना चाहते हैं एज पर लॉ, तो फिर वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कम रेट देने का। मतलब टेक्निकली ITR फॉर्म अपलोड नहीं हो पाएगा, कम दिखाएंगे आपको। This is my question, that ITR will not be uploaded in case Yes, we yes, will not give yes, 50C value. It won't allow. It won't. Even if we give an option to opt you to mention the lower value, the once it starts, it will get uploaded. That their rules, it will be rejected. Since the section 50C says that you can opt for a lower value if you have a market value is lesser than the circle rate. You can get a valuation from the valuer yourself. But in the registration deed, the value has been given at a certain rate. 10% का डिफरेंस का बेनिफिट है, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं, वो तो एक्ट में है ही है ना 10% का। मतलब this is from schema itself or it is being हेलो। हाँ जी, ये स्कीमा में ही है ऐसा कि 50C देना है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक, ओके, थैंक यू। Someone has asked details of advance checks deposited to be reflected is to be reflected form 26AS, please update. बेसिकली डिपार्टमेंट ने बंद कर दिए, फॉर्म 26AS में एडवांस टैक्स नहीं आएगा, अब AIS और उसमें ही आएगा, क्योंकि पहले टैक्स चालान जो थे जमा होते थे NSDL की साइट के थ्रू, अब डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ही हो रहे हैं, तो इट विल बी रिपोर्टेड ओनली इन AIS एंड TIS। 26AS में ये डिटेल्स नहीं आएंगी। जो कुलभूषण जी ने जो पॉइंट उठाया था उसमें अगर कोई मेंबर कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपना कुछ और, पार्डन, मैं मेंबर्स से पूछ रहा था, अगर मेंबर्स अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुलभूषण जी की जो क्वेरी थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, तो अगर कोई मेंबर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है कोई डिस्कशन में, एनी सीनियर मेंबर और मेंबर हु हैज सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस। चलो this could be taken in our discussion forum. ठीक है। So what I'll do is I'll share this PowerPoint presentation with Navdeep ji, so he can forward it to all of you guys. यस सर, हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। ठीक है जी। तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर, कुछ और डेलिब्रेट हम इंटरेस्टेड मेंबर्स के साथ करें या कंक्लूजन की तरफ लेके चलें सर? मेंबर्स अगर कोई डेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मेंबर्स आर वेलकम इफ दे वांट टू रेज एनी क्वेरी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा हो, कोई क्वेरी है तो वी कैन आस्क any issue relating to the software we can discuss over here. हम ताई चलोगे जेबे ओके ये आगे मटेरियल है, ये आगे रोकी Can we have the option to import advances details? अभी रिटर्न्स फाइल करना शुरू करेंगे तो इश्यूज आने शुरू होंगे।
फिर रख लेंगे Yes. दोबारा से फिर बुला लेंगे जैन साहब If someone has asked, can we have any other option to import advanced text details? But I think automation is already provided. You have to just specify the user ID and password. So advanced details would be imported in this matrix. There should not be any issue. फिर किसी मेंबर की अदरवाइज देन करंट टॉपिक कोई क्वेरी है, Any on any of the Seniors topic बैठे हैं। member तो डिस्कशन रख सकते हैं। So the While filing query one, left. is it necessary So to file audit report, balance sheet, etc.? While we filing should 148, go towards conclusion, sir. जो changes हैं तो कर दें। I think there are few queries. someone has asked while filing 148 return, is it necessary to file audit report, balance sheet? So if there are any changes, then they should refile the audit report. If there are no changes, then they can avoid. Please elaborate regarding opting in and opting out of new tax regime, old tax regime. So the thing is like that, earlier, even if your assessee has opted for old regime and his option has been like wiped off that he cannot go for a new tax regime. So all those assessees are now in the same level. Then by default on new tax regime, now they have to file a form to opt for a old tax regime. By default, all the assessees are in new tax regime. यानी कि सर जिसने लास्ट ईयर में कोई न्यू टैक्स रिजीम जो है वो ऑप्ट किया था, वो आज की डेट में न्यू करना चाहता है तो वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसको By कोई default, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने लास्ट ईयर ओल्ड regime भी ऑप्ट आउट किया था यस। और उसकी ऑप्शन खत्म भी हो गई थी कि वो जी न्यू टैक्स regime नहीं ले सकता इस साल, जी जी तो वो बाय डिफॉल्ट वो उसने न्यू टैक्स regime में ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है जी, राइट जी। तो न्यू टैक्स रिजीम के लिए उसको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नहीं, तो ऑप्ट अगर आउट ओल्ड करने के करना लिए चाहता आपको है, फॉर्म भरना है। लास्ट ईयर उसने चाहे ओल्ड किया था, लास्ट ईयर चाहे उसने न्यू किया था, हाँ, तो उसको अगर ओल्ड करना है इस बार तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ जी, और वो सिर्फ Sir, ITR 3 के लिए भरना है, हाँ। ITR 3 जी एंड ITR 4 के लिए भरना है जिसमें बिजनेस इनकम है। जी 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 1 और 2 के लिए तो सिर्फ स्पेसिफाई करना है। 1 और 2 के लिए ITR भरते वक्त उसमें क्लिक करना है। हाँ जी, हाँ जी। So there is Right, one sir. query, whether section 115BBE applicable on LTCG or mutual fund sold. 22 में हमने 2 कॉलम दिए हैं। 22 अच्छा, someone has asked about like point 115 number बीबी 22. लगना कितने है भाजी? ये मतलब ये someone स्मार्ट टैक्स की asked क्वेरी about- नहीं है सतबीर सिंह जी की, ये वैसे जनरल मेंबर्स को क्वेरी की है उन्होंने, whether 115BBE is applicable on LTCG or mutual fund sold. So whether 150 बीबी section अरुण जी कहाँ लगेगा? सुभाष जी थोड़ा सा कर रहे हैं डिस्कस। 115 BBE applicable on LTCG on mutual fund. ये जी ये मेंबर्स के लिए क्वेरी है, ये सुभाष जी थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। 115 बीबीई लगना कहाँ पर है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 68 to 69 के ऊपर लगता है वो। हाँ वो 68 69 जब इन्वॉल्व होगा तो ही होगा ना जी। अगर बोगस है तो फिर लग जाएगा। हाँ, तो अदरवाइज म्यूचुअल फंड आपने खरीदे थ्रू बैंकिंग चैनल्स होंगे और सेल भी थ्रू बैंकिंग चैनल्स किए होंगे, तो 68 69 मोस्ट प्रोबेबली तो एप्लीकेबल नहीं होगा किसी केस पे। अगर आपके किसी केस में एप्लीकेबल हुआ तो वी कैन डिस्कस इट सतबीर जी। जोगेश जी, जो स्मार्ट टैक्स है, जब 148 का नोटिस डालते हैं ना तो वो लास्ट कॉलम लास्ट नंबर लेता है सिर्फ। वो जो क्या सिस्टम जो आपका स्मार्ट टैक्स है वो अपने आप अगर हम नोटिस का पूरा नंबर भर देते, टिन नंबर या नोटिस नंबर भर देते हैं तो ऑटोमेटिकली पिक कर ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या? 2 दिन लगे रहे उसका, आपसे टिकट रेज किया फिर आपने ठीक किया। So वो आई थिंक डिपार्टमेंट से ही ऐसा है कि यू हैव टू एंटर द लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर। वो लास्ट मतलब जब पूरा नंबर भरते हैं तो पूरा आता ही नहीं है उसमें, फिर आपसे जो पूछा स्कीमा टिकट रेज किया, जो 2 दिन हम हाँ जो जेसन स्कीमा है ना उसमें ही कंडीशन है कि यू हैव टू एंटर द ओनली लास्ट नंबर्स।
आप पूरा नंबर अगर डालेंगे तो वो रिटर्न अपलोड नहीं होगी। कैन स्मार्ट टैक्स, हाँ जी होगी, जैन साहब आपकी क्वेरी होगी। सर एक ये सतबीर जी बाही जी का है, एक इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये हैव रिसीव्ड नोटिस ऑफ डिमांड, ये क्लियर नहीं है क्वेरी। सतबीर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। बेसिकली सर बीटी वो नोटिस गेट बैक टू ऑन हिम। तो काफी सारे यूजर्स हैं जिनको कोई भी इशू रहता है रिलेटेड विद नोटिस, तो दे सेंड इट अक्रॉस टू अस, वील इवैल्यूएट दोस। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें होती है उनके एंड में या हमारे एंड में, तो वी गाइड देम हाउ टू करेक्ट दैट नोटिस। और अगर कोई डिपार्टमेंट के एंड में प्रॉब्लम होती है तो वी फॉलो अप विद द डिपार्टमेंट एंड सेंड दिस नोटिस टू देम। एंड काफी सारे केसेस हुए हैं कि उन्होंने उनकी गलत प्रोसेसिंग के कारण उन्होंने सू मोटो पे भी ठीक किया है। So he can आपका send ठीक such है, kind आप of टिकट notice to का us and we'll evaluate those notice. आप टिकट का रिप्लाई तो बहुत जल्दी देते हैं, स्मार्ट टैक्सी सर्विस के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नवदीप जी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। स्मार्ट है सर, वेल सेड सर, बड़ी स्मार्ट टैक्स की सर्विस बड़ी स्मार्ट है सर। नो डाउट। सर While there is a filling, query, इसलिए लुधियाना वालों को इतना डाल लिया है इतने सालों से। thank you so much, sir. Navdeep ji is always Sir, available. सर क्वेरीज हैं, एक दो क्वेरीज अरुण जी। can smart tax provide one click option to import TDS, TCS and advanced tax and self assessment tax at data entry window? Basically, sir, this option is already there. जब आप ITR फॉर्म में जाते हैं ना, उसमें सारा डेटा पे वो टिक ऑप्शन दिए हैं। वो नवदीप जी को कॉल कर लें, वो बता देंगे कि तो सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म का, अदर सोर्सेज का, नवदीप जी आप एडवांसेस बता का, दो थोड़ा सा सेल्फ इधर ही। असेसमेंट का, ऑल द डेटा वुड बी इंपोर्टेड विद इन वन क्लिक। दिस ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट। नवदीप जी आप थोड़ा सा कर दो elaborate। टैक्स रिटर्न्स के मेन्यू में एक ऑप्शन है टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम TIS AIS। तो एक विंडो खुलती है जिसमें वो आपसे ऑप्शंस को टिक करने के लिए पूछ लेता है। तो जो जो ऑप्शंस आप टिक करोगे वो सारा डेटा एक ही क्लिक में इंपोर्ट हो जाएगा। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। The option is there already. I think since last year ये option है हमारे पास। No books of accounts prepared. We feed income on presented basis. So why it asks for profit as per books? तो वो सिंपल प्रॉफिट है, वो एज पर बुक्स का लोगों ने लिया हुआ है। सिर्फ फिगर डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, किसी ने कम ज्यादा डालनी है बुक्स के हो गए तो बता भी सकते हैं, पर कोई एस्टिमेटेड बेसिस का प्रॉफिट तो नहीं डालनी है। So basically it is just an estimation of profit. अगर if no account case से उसको लिंक करना है तो we can do that also. सिर्फ लिखा हुआ है तो earlier फॉर्म में ये ऑप्शन कहीं नहीं जाती। इट इज जस्ट फॉर योर कंप्यूटेशन एंड योर रेफरेंस पर्पस। सर एक क्वेरी थी अपनी के अपना 22B जो कॉलम था उनको 3CD में स्मार्ट टैक्स में नहीं मिल रहा था। बेसिकली वो कॉलम नंबर 22 पे जब जाएंगे ना, हाँ वो टैब में उसमें ही आगे सेकंड कॉलम है, उसी में 22 के साथ उसको हमने मर्ज किया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 22 खोलेंगे तो उसमें एक सेकंड कॉलम आ जाएगा, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल दें। सतवीर भाई जी ने हैंड रेज किया हुआ है, भाई साहब प्लीज बताएं। सर मैंने एक नोटिस आया डिपार्टमेंट से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था म्यूचुअल फंड्स की शेयर पे, उस पे उन्होंने 115 BB लगा दिया है। बैंकिंग चैनल से सारा एंट्री हुआ है, क्या नहीं कौन से सेक्शन में नोटिस आया था? ये 143 1A का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग का नोटिस 143 1A में आया? हाँ जी हाँ जी, उसमें 115 BB लगा दिया। हाँ हाँ सर इसकी असेसमेंट हुई होगी, आप चेक कर लेंगे प्रोसीडिंग कहीं उसमें असेसमेंट हुई हो फिर आपको आया हो। उसमें तो 141 सर, उसमें कैसे लग गया सर? कौन सा साल कौन सा है जी? साल कौन सा है जी? ये 23-24 असेसमेंट ईयर। फिर तो नहीं है सर, फिर नहीं हुई होगी सर। सर या तो नहीं 115 BB लगाया पक्का? हाँ पक्का BB लगाया सर। सर आपने कॉल करिए, रेक्टिफिकेशन फाइल करके देख लीजिए सर। आई थिंक सो, हम्बल सजेशन। एक बार रिटर्न चेक करें ना, कहीं गलती से ना भर दिया हो इन्होंने फिगर। यस, कोई कॉलम ना गलत भर दिया हो। सर कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। हमारे रिटर्न में है, जब हम अरुण जी फेसलेस वाला कितने ना 141 करता हूँ।
उनको उन्होंने आदत पई भी 115 बीवी लगान दी। नहीं, हमारे रिटर्न में कोई ऐसा कॉलम है कि हम खुद 115 बीबी नहीं, टिक है ही कर नहीं। सके? है जी कॉलम तो है। तो फिर वो तो नहीं टिक हो गया था कहीं? अच्छा ऐसी खुद डिक्लेयर कर देवे तो होना चाहिए कॉलम तो। नहीं, कॉलम है, सर मैं कॉलम पूछ तो रहा हूँ, है जी। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को श्योर नहीं है कि 115 नहीं श्योर बीबी है सर, श्योर टिक जी, कर ਗੁਪਤਾ वैसे ਜੀ भी ਹੈਗਾ ਜੀ ਕॉलਮ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, तो वैसे भी स्पेशल रेट है ਉਹਦੇ ਲਈ और 115 बीवी लगना ही इतने 68 69 69 ए बी डी सी लगे हुए। हाँ सर, तो वही स्पेसिफिक प्रोवाइडर ही है समझ आ सेक्शन। रहा है सर। क्यों कंबोज साहब ਨੂੰ ਕਰੋ जरा अनम्यूट जरा चुप बैठे आज। कंबोज साहब जर्मनी बैठे हैं, वो तो है कि कंबोज साहब बिना तो मीटिंग क्लोज नहीं होनी। कंबोज साहब जर्मनी तो आज इंटरनेशनली कर रहे हैं अटेंड। इसका क्या नहीं बोलते वे हाँ, लग रहा है उन्होंने। जर्मनी देखो वाले जी घट पूछ बोलते रहे हैं। सुन ही रहे हैं सब लोग। हाँ जी वो सब दी एसटीडी कॉल है, सब दी एसटीडी कॉल है। नहीं एसटीडी सर थोड़ी जर्मनी दी आबोहवा बारे ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ मैं तो ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ। वाही साहब दी क्वेरी सुन के बड़ा हैरान होया है भी कैसी कैसी एडजस्टमेंट्स सीपीसी प्रपोज कर रहा है। वैसे तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ that is why so many changes। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂजेस ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन, तो कोई ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ क्या जिन्नी ये अमेंडमेंट से कर रहे हैं और जिन्ने कॉलम्स भर रहे हैं, is it easily feasible to fill the forms correctly? क्योंकि The काफी only thing केसेस is ऐसे ਹੋ ਰਹੇ हैं ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਨ ਸਕਿਪਸ ਇਟ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੁਐਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵੀ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, otherwise it will lead to a long litigation। राइट सर, बेसिकली वही मैं हम सर अपनी भी भी फाइल करें, ये 154 भी सजेस्ट करें। करूंगा कि कि मैं एक तो बार यही समझ शेयर सकता जब दा स्मार्ट टैक्स आया है सिस्टम बहुत इजी हो गए हैं रिटर्न फाइल करने, बट स्टिल इवन देन फॉर्म हैज टू बी फिल्ड with all columns। if you leave one then problem, if you just click a wrong form then again। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ some computation ਜਾਂ some adjustment should come out instant ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਕਾਲਮ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एडजस्टमेंट्स पता लग जान। सर इसमें पता क्या है कि जहां तक जेसन है, जेसन के रूल्स हैं, तो जो स्मार्ट एक्स जो चीज फॉलो करता है, व्हाट वी डू इज कि जितने भी आईटीएस जब भी नए आते हैं और थॉरली उसको टेस्ट करने के लिए जो सेम डेटा स्मार्ट एक्स में फीड करते हैं वो हम डिपार्टमेंट की यूटिलिटी में भी फीड करते हैं, and we cross check all the calculations and permutation and combination with the utility and ensure that our results matches with those। बट इश्यू कहाँ आता है कि कुछ रूल्स जो हमारे साथ शेयर्ड हैं, जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है डेट इज ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो और जो यूटिलिटी वाला डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। सो क्या होता है कि कई बार कुछ उनके यहाँ प्रोसेसिंग में ऐसे रूल्स लगे होते हैं विच आर लिटिल बिट डिफरेंट, which have not been incorporated in IT or neither shared with a software developer utility provider। कई तो उनके रूल्स हमें जब बाद में पता चलते हैं कि और हमें लगता है कि दिस रूल्स शुड बी एडेड, तो दोज रूल्स आर एडेड इन द स्मार्ट एक्स। और कई रूल्स ऐसे होते हैं जो उनके एंड पे ही गलत होते हैं, तो वी फॉलो विद दोज रूल्स की प्रोसेसिंग में आपके यहाँ ही गलती है। एंड इन दोज केसेस अगर आपने नोटिस किया होगा कि सुमोटो पे वो सारे के सारे नोटिस को रीप्रोसेस करके वापस ले लेते हैं। So these are the teething issues, but still I feel कि we have come a long way। अब जो इनिशियल प्रॉब्लम्स आती थी कि जो पहले बहुत सारे नोटिस आते थे, अब उनका आना बहुत कम हो गया है। अब नोटिस उस केस में आता है कि विच इज समथिंग न्यू।
पहले तो ये था कि बहुत सारे नोटिस आते थे, कैलकुलेशन में बहुत फर्क होता था। अब आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा 80 to 90% थिंग्स आर गोइंग स्मूथ, 8 to 10% इश्यूज हैं। एंड दैट ऑल्सो वी आर, कोई भी ऐसा इश्यू लगता है कि अगर लगता है कि वो रूल यूटिलिटी में नहीं है, प्रोसेसिंग में है, तो वी इंश्योर दैट द सेम रूल इज इनकॉर्पोरेटेड इन द स्मार्ट टैक्स। कई बार हमें ये भी होता है कि कई बार हम रूल को इन्फोर्स कर देते तो हमें यूजर का ईमेल आ जाता, टिकट आ जाता है कि आपने ये रूल क्यों इन्फोर्स किया, डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में तो बन रही है, या XYZ सॉफ्टवेयर में तो ये रिटर्न बन रही है, आप क्यों रोक रहे हो इसको। तो उस केस में भी हमें अलाउ करना पड़ता है। देन इवन इफ वी टेल यूजर कि नहीं आपको प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी, देन आल्सो समटाइम यूजर से नहीं, जब प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी तब हम देख लेंगे, आप रिटर्न भेज दो। वो तो जैन साहब ये है ही है जी डिपार्टमेंट में कि जो, जबकि जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस, नोटिफिकेशंस या इंटरनल सर्कुलर्स हैं, दैट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन। राइट, ओनली देन देयर कैन बी ए गुड गवर्निंग सिस्टम। जैसा आपने अभी बताया कि आपके इस सिस्टम के रूल्स और है और प्रोसेसिंग के रूल्स और है, अगर वहां डेफिनेटली मिसमैचिंग होगी तो मिसमैच सर्टेनली ऑटोमेटिक एरर तो नहीं पता लग सकती है। नहीं पता लग सकता। इनफैक्ट 7 को ई गवर्नेंस का सेमिनार है हमारे डिपार्टमेंट के साथ, जी, तो विल टेक अप दिस मैटर विद देम आल्सो। ये जरूर लेना चाहिए कि जो चीज पब्लिक के प्रोसेसिंग के लिए है या रिटर्न फाइलिंग में जो भी उन्होंने अप्लाई करने हैं रूल्स, नोटिफिकेशंस या सिस्टम्स, जो भी करना है, दैट शुड बी मेड अवेयर टू एवरीबडी। राइट, पर्टिकुलरली आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आपने आगे एक ब्रांचेस में आपने इसको डिलीवर करना है और लोगों ने उसको यूटिलाइज करना है, यूटिलिटी में लाना है। तो ये तो चीजें बहुत जरूरी हैं जी, अदरवाइज मेंबर्स को ही दिक्कत आती है जी। तो फिर वहाँ, क्योंकि वहां तो देखिए सिस्टम ने काम करना है, प्रोसेसिंग में कोई बंदे तो बैठे नहीं है कि एक एक रिटर्न उठा के कर रहे हैं। सही बात, प्रोसेसिंग तो सिस्टम ने काम कर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। सर एक क्वेरी और थी अपनी विकास श्रीन जी की, इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट डू वी नीड DSC? आई थिंक वो हमने पॉइंट टेक कर लिया। बेसिकली अभी तक जो हमें अंडरस्टैंडिंग है वो ITR की है, बट आई थिंक प्रैक्टिकली जब करेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी शायद EVC से हो जाना चाहिए, नहीं तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा कि अगर आपने ITR 3 को EVC कर दिया और टैक्स ऑडिट को विद DSC कर दिया, तो टेक्निकली इट शुड हैपन, बट स्टिल कंफर्म हम कर नहीं सकते जब तक एक्चुअल कोई केस नहीं होता। एक सुभाष जैन जी की जो क्वेरी थी उसके ऊपर मैं दोबारा थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। जो 148 के नोटिस पे अगर रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है तो क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट वगैरह दोबारा देनी चाहिए या नहीं। तो यूजुअली 148 में मैंने ये देखा कि जो फर्म्स और कंपनीज हैं या इंडिविजुअल है, वो यूजुअली तो रिटर्न दाखिल होती हुई है। लेकिन लेट अस टेक एक हाइपोथेटिकल केस कि जहां नहीं हुई और ऑलरेडी वो उस पर कवर होता है, तो आई थिंक 148 के नोटिस में सभी कुछ दाखिल जरूर करना चाहिए। अदरवाइज तो वो फिर उसकी 148 की जो रिटर्न है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। सर अगर ना डालना चाहे तो चल सकता काम? हाँ जी, ना करना चाहे अगर ना डालना चाहे तो क्या चल सकता है या इनवैलिड हो जाएगी? क्वेश्चन ये है। सर ਉਹਦੇ ਚ मैं ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो रिटर्न भी वो इनवैलिड कर सकता है EO और 148 ਦੀ ਤੇ और डिफेक्टिव इनकम्प्लीट डिफेक्टिव असेसमेंट होगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। डिफेक्टिव रिटर्न मे बी होएगी या इनवैलिड मान लो होएगी? ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ कैश डिपॉजिट है या हाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, हाई विड्रॉल्स हैं जिन्हों के बेस ਤੇ ITRs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ 148 ਦੇ। तो ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ और 1 करोड़ 2 लाख रुपया विड्रॉल हुई। तो बड़ी हैरानगी हुई उस केस च कि ईओ ने दोनों ही जोड़ दे, ट्रीटेड बोथ एज ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट और 2 करोड़ 27 लाख रुपए ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਪਿਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
होल्ड करता कि इट्स ए केस ऑफ हाई पिच असेसमेंट, तो अपील भी ਉਹਦੀ जल्दी फिक्स हो गई। खैर सबमिशंस भी देती हैं, लेट अस सी व्हाट द रिजल्ट कम्स आउट। तो आई एम होपफुल कि कोई ਵੀ CIT अपील ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ। तो लेकिन ऐसे केसेस 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8% ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। तो ऐसे केसेस 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ जी। राइट सर, एनी अदर क्वेरी अरुण जी? देखिए Sir, we do have a query. जी। We have wrote it in chat box also that sometimes we select new regime while filing return through SmartText, but the return still gets processed in old regime. And sometimes it is vice versa in some clients. Which idea this has happened? Pardon? In which idea this has happened? In which ITR? 2, 4. ITR 4. 3 3 and 4. अजय जो 10 IE है आपने कब सबमिट किया था? बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR और आफ्टर फाइलिंग ऑफ ITR? Before filing of ITR. ITR टाइमली फाइल कर दी थी आपने? ITR तो नहीं लेट? अच्छा ऐसा है इस केस में ना, जिस केस में आपको इश्यू आया ना उसका 10 IE और ITR मेल कर दीजिए। Sometimes there is an issue in processing. We'll take up with them. Okay, so we have to mail it to you, right? Yes, yes. 10 IE and the ITR, right? हाँ रीप्रोसेस रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और साथ में लॉगिन डिटेल्स भेज देना। We'll just get it cross check. Okay, okay. Because Have we you प्रोसेस की faced भी this डाल issue सकते हैं last year रिक्वेस्ट। also. Pardon? We faced this same issue last year also. ये असेसमेंट ईयर मैम कौन सा है आपका? Let us check and we'll get back to you. There must be some 23, logical explanation to this or a technical fault at their end. Okay, we will share the details with you. Right. Thank you. जैन साहब इस केस ऐसे केस में रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते? सर मैंने डाली थी और मेरे को हो गई है सर। We 144 के। filed the request for reprocessing also. Still the issue persists. Let us check the first whether what data has gone into the JSON file and whether form number 10 IEA has been filed before due date, before filing of ITR. So let's just get it cross check and then maybe there's a technical fault at their end, so we'll ask them to take care of that. Okay, sure, sir. Thank you. Have you filed the return timely? Yes, we have filed the return timely. Okay. Thank you. So members, any other question? अरुण जी एक दो ये क्वेरीज हैं एप्लीकेबिलिटी और व्हाट अबाउट रॉन्ग ईमेल? सुरेश कुमार जैन जी की दो क्वेरीज हैं। वो मेरे ख्याल सुभाष जैन जी ने आंसर करी हैं। अच्छा है जी, कर दी हैं? सुभाष जैन जी ने आंसर किए थे सर आधा नहीं किया है। हाँ सर, आप प्लीज पूछिए क्वेरी अपनी। सर मैंने 148 की नोटिस रॉन्ग ईमेल में आई हुई है सर, या सेकेंडरी ईमेल में आई है, प्राइमरी ईमेल में नहीं आई है, तो उसका कोई वैलिडिटी होगा क्या? और असेसमेंट ऑर्डर 144 में पास भी कर दिया उसने, पेनल्टी भी लगा दी है। सर आप अपील में ये ग्राउंड ऑफ अपील लेंगे तो आजकल बहुत जजमेंट्स फेवर में आ रही हैं सर। तो अगर अपील का मैटर बन चुका है ये, तो आप अपील में ग्राउंड ऑफ अपील लेंगे तो मतलब इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको इसका रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत जजमेंट्स अब फेवर में आ गए इनकम टैक्स में। सर इवन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है पुटिंग नोटिस ऑन द पोर्टल इज नॉट एनफ। इट शुड बी सर्व्ड पर्सनली और बाय ईमेल। ईमेल मेरी है नहीं, किसी और ईमेल पे चला गया या पोर्टल में रख दिया अकेला, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। सर दैट शुड बी पर्सनली मेल करना चाहिए या ईमेल करेक्ट ईमेल में देना जरूरी है? दोनों नहीं हुआ तो इनवैलिड हो जाएगा एक्ट असम ऑर्डर नॉट वैलिड इन माय व्यू सर। केसेस आए हैं सर। सर जो भी ईमेल डिपार्टमेंट के पास आपकी वैलिड ईमेल है उस पे किया जा सकता है सर। कोई ITR में है, वैलिड ईमेल नहीं है सर। वैलिड कोई ITR में रही हो, आधार में रही हो इवन, या आपके पैन डाटाबेस में रही हो, किसी पे भी किया जा सकता है सर।
वैलिड ईमेल नहीं है सर, दैट इज श्योर। राइट सर वो मतलब सर्विस ईमेल नहीं जो हुई। जजमेंट्स है आप उनको जजमेंट्स का आप जब लेंगे तो उसमें मतलब उन्होंने क्लियरली बोला है कि सिर्फ वो सर्विस में भी उन्होंने दिया हुआ अपना असेसिस को वैलिड सर्विस नहीं होगी ना सर जी, अरुण जी वैलिड सर्विस नहीं ना हुई है। वैलिड सर्विस नहीं मानी जाएगी वो, तो वो जजमेंट्स आपको आपके फेवर में आपको सपोर्ट करेंगी। वो ईमेल जो आप कह रहे हैं अगर वो मतलब अगर वैसे ही इनवैलिड है तो फिर तो और आपका केस स्ट्रॉन्ग है। जिस ईमेल पर आया है ना, ये कोई ना कोई ईमेल डिपार्टमेंट के पास होगी तभी उन्होंने डाली है, वो हाँ, चेक वो तो है, पर वो करना। इसलिए वो आपको केसेस सपोर्ट करेंगे। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी जैसे केस फेवर में है, तो अब अपील का मैटर बन ही गया, तो ये आप ग्राउंड ऑफ अपील नहीं तो आपको फेवर में उसका आएगा। Sir, there is another query. Department is sending emails to all emails in system feeded at time of filing ITRs, but relevant emails are only one of them. Please advise to limit that emails to be relevant emails only. इन्होंने पूछा कि भाई जितनी भी ईमेल्स उसमें सिस्टम में फीड हुई है सब में आ जाता है, तो कैसे कर सकते हैं कि कम से कम ईमेल में आए वो। मोहित जैन जी का है प्रोफाइल में क्वेश्चन। जाके इफ आई कैन चेंज द ईमेल आईडीज, और बट ये तो डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रोसेस है ना, उनके खुद के ट्रिगर्स हैं, दे आर सेंडिंग इट टू ऑल द ईमेल्स। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक तो सेल्फ ईमेल हो गई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट की ईमेल हो गई, तो टेक्निकली दोनों को मेल It has been requested many times, but even then they are sending emails to the other professionals which are not related to मोहित जी वो ना पैन डेटाबेस में या रिटर्न सर वो बेस सब में कुछ कहीं कर ना दिया कहीं जी, वो इवन fix- देन जा रहे हैं जी, इवन देन वो जा रहे हैं गलती जी। है, ये वो मानते नहीं है। सर सामने ये हो तो क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जुड़ा ही है, तो डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास तो जितने भी हमने भेज दिए तो कोई ना कोई तो रेलेवेंट होगा। तो तो बस यही कर रहे हैं क्वेश्चन सर, जुड़ी हुई है। हालांकि गलत जोगेश जी, जो आपने आंसर दिया डिजिटल सिग्नेचर वाला, वो प्लीज दोबारा कर देना कि डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि टैक्स ऑडिट पर फाइल करने के लिए। अभी क्लैरिटी नहीं है। ITR 3 के लिए तो नहीं है। ITR 3 अब आप आधार OTP या EVC से कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, बट मेरी ऐसा मानना है कि जब आप ITR 3 फाइल करेंगे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब आप एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सर कोई केस अभी आया नहीं है, भी अगर आएगा तो उसके बाद ही इसको चेक करके दें। वैसे मेरे हिसाब से भी नहीं होगा सर ये। क्योंकि नहीं तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा कि आप ITR तो EVC करवा लो और टैक्स ऑडिट के लिए DSC मांगो। सर ये पर्पस इनको बाद में पता लगता है डिफीट हुआ है, पहले वो कर देते हैं, तो इसलिए ये चेक करके पता लगेगा। सेक्शन में जब स्कीम में प्रोवाइडेड हो तो ही पता चलेगा। वो सीधे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर जब चलाते हैं तभी हमें पता लगती हैं, चाहे जितना मर्जी लॉ पढ़ा हो। तो उसी अरुण जी मैं ये देखा अभी रिसेंटली बहुत सारी जजमेंट ऐसी आ रही है जो सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू हुए हैं ना डिपार्टमेंट के रिलेटिंग टू दिस फेसलेस असेसमेंट, ई असेसमेंट, वो बहुत काम आते हैं अपील में, और ट्रिब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट मानती है बहुत स्ट्रांगली, क्वैश कर रहे हैं ऑर्डर्स को। So members, any other query? तो दीपक जी। जी सर, हाँ जी देखते हैं। हाँ घर में कर क्या देखते योगेश जी, सुने जा सकता। thank you योगेश जी, नवदीप जी and entire team SmartX for such a wonderful deliberation. We all are very thankful to you for this deliberation as well as for flawless services. सुभाष जी ने जैसा कि कहा कि बड़ी इनकी जो इंक्वायरी रेजोल्यूशन है दैट इज वेरी गुड, और आई मस्ट कंग्रेचुलेट नवदीप जी स्पेसिफिकली फॉर दिस. ही इज अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑल द टाइम. And now, before proceeding to the concluding remarks and the vote of thanks, I must name the other seniors who have joined a little later. Sumir ji, ITCA President, Bindra ji, TBA, Subhash ji, SK Jain ji, Pavan Garg ji. We welcome you all. कंबोज सर ने परफेक्टली बोला है, और उनके बिना कोई भी वेबिनार जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकता. दैट हिज वर्ड्स इंडोर्स दैट व्यू आल्सो.
Now, friends, I must inform you all. मुझे अभी मैसेज मिला है प्रेसिडेंट सर का. नेक्स्ट डिस्कशन फोरम का जो टॉपिक है, that has been finalized as section 195 and its intricacies of law which is revolving around section 195. And our senior chartered CA Arun Gupta ji will take the lead to deliberate on this section, and we all will be free to discuss in the group discussion there. Now, I request CA Arun Gupta ji to kindly have concluding remarks as well as vote of thanks. Arun Gupta ji, please. We have all, as we are already discussing, but there are certain things कि जितना भी लॉ पढ़ लिया जाए, कुछ चीज जब हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं तभी पता लगती है. इनकम टैक्स में या किसी भी रेवेन्यू लॉज में जब आजकल ऑनलाइन फाइलिंग है, so there are certain things like 143(1) का हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि 70-80% अब स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो मैंने भी देखा कि कई बार जैसे 143(1)(a) के अंदर कुछ एडिशन होके आती है तो हमें ऐसा लगता है ये एडिशन गलत हो गई है. मतलब पहले तो होता था कि एडिशन एक्चुअल में गलत होती थी, बट नाउ डेज आई सी कि देयर इज ऑलवेज समथिंग. कई बार हमारे से भी कुछ गलती हुई होती है जिसके कारण वो 143(1)(a) में एडिशन होके आ जाती है. So the things are getting streamlined. There is no doubt in that. But of late, like अभी जैसे सदगीर भाई ने बताया, कुछ ना कुछ ठीक है. अंशु जी म्यूट कर दो यार सबको. So like Avi Bhai Sahab was also discussing that he has received a notice of demand under section 115 BBE under section 143(1)(a, मतलब जो कि सुनने में एक नई चीज ही लग रही है. So new things are coming every year, new issues are coming, but old issues are also getting settled. There is no doubt in that कि भाई हम जो पीछे हमारी जो एडिशंस अगर कुछ होके आ रही थी तो अगर ऊपर कोई चीज जाती है तो उसका टेक केयर करने में वो ध्यान देते हैं. So the things, this we have to take that this online thing is going to go on and we have to learn the things as they move on. तो इसमें स्मार्टेक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है और इनकी जो टीम है, नवदीप जी और योगेश जी और कविता मैम, मतलब दे आर रियली वेरी हेल्पफुल. कोई भी इशू आता है मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं, अगर नहीं सॉर्ट आउट होता तो दे रीच आउट टू योगेश जी और नवदीप जी और Kavita ma'am, and they are always there to help us. And most of the cases the query get resolved. और अगर इशू होता है कि इशू को टेकअप करा जाए ऊपर सीपीसी में, तो वो भी दे हेल्प अस टू रिजॉल्व दैट इशू एट डिपार्टमेंट लेवल. देयर इज नो डाउट इन दैट. मतलब ये हमें एक ऐसा, अगर वैसे हम किसी का सॉफ्टवेयर लेते हैं पर्सनली स्पीकिंग, तो इट्स नॉट लाइक वी आर परचेजिंग अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्मार्टेक्स. मतलब वी फील दैट दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम, दे आर पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, they are part of our DTBA, they are part of our Ludhiana chapter, and this they have made over the period of time, over the number of years, by getting themselves involved with us. But we have never felt that we are just taking a software from them. So they are always there, and we are really thankful to the team. Whenever we call them, they are there to hold a seminar or a workshop. They are always there to help the members, and it has never, we have never received any complaint at bar level or chapter level that SmartX people are not helping us, or they're not reverting to our queries. So this is a very, very unique and nice thing. Today also, when we contacted them, they were readily available to give a seminar on the changes that are there in the ITR. So I'm really thankful to the SmartX team, Navdeep ji, Yogesh ji, for taking out their time and giving the members insight into the new amendments that have come into the ITR. And I think we will, क्योंकि अभी ITR फाइलिंग शुरू नहीं हुई है, तो मेंबर्स की इतनी क्वेरीज ITR के रिलेटेड नहीं है, लेकिन these queries are going to come, I think, in the next 1 month. So maybe we will be needing another meeting with them, and I am sure that they would be available every time. And I am also thankful to the members for coming up with the queries
and discussion, which has made this study circle meeting really a productive one. Thank you. Thank you, everyone. Now,